आप कौन से पीएचडी के लिए जा रहे हो? सर लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक का इंटरव्यू है, जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके सर। यस। अच्छा, आप किस लिए जा रहे हो, जीपीएससी के लिए? यस सर, उसमें लेक्चरर इन डिप्लोमा कॉलेज सर, उसका इंटरव्यू है। अच्छा अच्छा, लेक्चरर का, ठीक है ठीक है, डिप्लोमा कॉलेज है ना। यस तो कौन से आपके पास सब्जेक्ट का आपको देना है? सर, थर्मोडायनेमिक्स सर। थर्मोडायनेमिक्स का, अच्छा ठीक है। तो आपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर कर रखा है या फिर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर कर रखा है? बेसिक अभी किया है सर। बेसिक एप्लाइड में भी करा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है, नो इश्यू नो इश्यू। तो ओके लेट अस सर। स्टार्ट हियर। सो सबसे पहले यस मुझे सर। बताओ, आपके पास यहाँ पे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस क्या होता है? क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। सर, on the basis of macroscopic approach or in microscopic approach, it means if we deal with a molecular level, then it is defined as a st- somewhat I confused, sir. One is at a molecular level and other is at a macroscopic level. ठीक है, नो इश्यू। अच्छा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस? Okay, yes, sir. The property which are independent of mass is called as an intensive property, and the property which are depend on extent. Extent means on a size. It's called extensive property. ओके, प्रॉपर्टी एग्जांपल प्रोवाइड करो मुझे आपके पास यहाँ पे दोनों के। Yes, sir. In simply, sir, if we want to define any property, whether it is intensive or extensive, we can divide it by an imaginary boundary. For example, temperature. In a system, if we divide imaginary by two parts, then temperature is independent of mass. It is called intensive property. Whether other side mass, volume, it is dependent on the extent or size or mass. So it is a extensive property. ठीक। अच्छा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे पास है, ठीक है ना, उसे आप ऐसा क्यों कहते हो, इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट? Because first of all, zeroth law is defined by अगर हम कहें कि किसी दो बॉडी are in two bodies are in thermal equilibrium with a third body, then both bodies are thermal equilibrium with each other, and when third body is replaced by a thermometer, if so it measures the temperature, so it is in this way we can find the property temperature with this law. अच्छा, थर्मोमीटर के टाइप्स बताओ जरा मुझे, कौन कौन से थर्मोमीटर के बारे में आप जानते हो जो आपने पढ़े हो? Sir, okay. Basically, thermometer on the basis of, sir, constant volume, constant pressure, and based on electromagnetic flux, and on the basis of mercury expansion. अच्छा, आपके पास यहाँ पे थर्मोकपल है बेसिकली, वो कौन से टेम्परेचर रेंज के लिए आप यूज करते हो Sir, थर्मोकपल? no idea, sir. ठीक है। नहीं. अच्छा, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर अ First साइकिल। law, for a cycle, first law of thermodynamics states that the net amount of Q net, मतलब heat supplied or net heat is equal to the net work for a cycle. एंड व्हाट Q अबाउट net फॉर is अ equal सिंगल to प्रोसेस? एक सिंगल प्रोसेस के single लिए? process. Okay, so for a single process, Q is Q is equal to U plus PV. Sorry, E plus work. Heat is equal to the total energy change in energy plus work done on a system or by the system for a Okay, let us process. suppose if we have a first law of equation as dq equal to du plus pdv. dq equal to du plus pdv. For which system and Okay. for which process it is applicable? It is applicable for reversible process only, sir. What about the system? Close या open? Uh, mm, Maybe, sir, for a closed system. Why? Um, Sir, the work here, WPDV is defined maybe for a closed system. For open system, it is the अच्छा, integral of VdP. ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो होती है ना परपेचुअल मोशन मशीन्स, ये क्या होती है? The perpetual motion machine are imaginary machine which violate the law, any law. For example, ppm 1, it is violating the first law of energy. Without giving any energy, we are
we export we get enormous amount of energy without any input. For अच्छा practical ठीक है। example, without input of petrol, our bike was continuous learning. अच्छा आपके पास यहाँ पे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट Yes, एंड सेकंड लॉ कौन से लॉ को वायलेट कर रही है? second law, sir, because for सिर्फ a system, yes, it satisfy the first law, sir. कैसे? So first law for a system said the net amount of heat is equal हम्म, to the work net amount of work, and for us, it not violate the first law. ठीक है। क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी क्या होती है? Sir, closest inequality is defined by integral of del q by t for three process. First, for reversible, for irreversible, and and third is when it is not possible. For a reversible process, del q by del t is equal to 0, and del q by del t is less than equal to 0 for irreversible process, and del q by del t is greater than 0 is not possible is for a system. ठीक है। अच्छा कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली क्यों नहीं पॉसिबल? Sir, two reasons. First, isothermal for any isothermal process, for reversible isothermal process, we have enormous, large amount of time to feasible this process. And second thing, if we study the Carnot cycle, the process include isothermal as well as adiabatic. When process is insulated, we have to insulate this in during process, and spontaneously for the other process, we have to remove the insulated material, which is practically not possible. Okay, for example, if we apply it for a cylinder head, of first time cylinder head is insulated, and second time it is directly connected to source and sink. So how it is possible for अच्छा practical आपके पास मुझे application? बात बताओ, आपने तो ये मुझे सिलेंडर पिस्टन में बताया, क्या कार्नोट साइकिल हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन में कैरी आउट नहीं करवा सकते विदाउट एनी सिलेंडर पिस्टन? External, sir, for आई एम जस्ट सेइंग feasibility, दैट। okay. बोलो। Sir, can you repeat, sir? One, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने मुझे एक्सप्लेन करा कि सर इंसुलेटेड जैकेट yes, sir. आपको लगानी पड़ेगी, आपको रिमूव करना पड़ेगा, इट इज नॉट Mhm. प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आप इसे सिलेंडर पिस्टन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्यों कैरी आउट करवा रहे हो? आप सिंपली एक ओपन सिस्टम में कैरी आउट करवा दो, लाइक इन द केस ऑफ पावर प्लांट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल Uh, कंबशन इंजीनियर। Against the process, is it a reversible isothermal process? It is time consuming process, and we need a large heat exchanger for to sustain this process. It is not practically possible externally. ठीक है। ठीक है, ओके मनदीप, लेट मी पैनल फीडबैक यार। देखो सबसे Okay, पहले sir. आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा के लिए जा रहे हो उसके लिए ठीक है। Yes, एक sir. कुछ कुछ जगह आपको Yes, sir. इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं आपने आप बिल्कुल लाइकनेस शो करी। जब फर्स्ट होगा आप Okay. थर्मोडायनामिक्स का सिंपल एक्सप्रेशन में आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई किस सिस्टम और Okay. किस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, वहां पे आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आप जस्ट वहाँ Okay. पे डीयू या डीई पैरामीटर को देख के मुझे बता सकते हो कि कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम ही नहीं होने वाला। Ah, ठीक है, और जो पीडीवी okay. एक्सप्रेशन है दैट इज बेसिकली टेलिंग यू इट इज स्पेसिफिकली रिटन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। कार्नोट Okay. साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आपके आंसर की क्लैरिटी नहीं थी, आप आंसर को घुमा Okay. फिरा रहे थे कुछ ज्यादा ही। ठीक है, ऐसा शायद फर्स्ट Okay. टाइम स्टैप दे रहे हो तो मैं भी ऐसा हो रहा हूँ। ये तो थोड़ा Yes, sir. ध्यान रखना आपको बस यहाँ पे। Okay. ये काफी जगह आपने यहाँ पे घुमाने की कोशिश करी है, क्योंकि आपकी इमेज ही खराब कर रहा है एक तरह से कि आपने आपको क्लैरिटी Okay. नहीं है उस चीज की, तो थोड़ा ध्यान रखना। Okay. ठीक है ना? Okay. जब भी आपसे कार्नोट साइकिल के बारे में पूछा जा रहा है तो वहां पे आप कोशिश करा करो इरिवर्सिबिलिटीज के बारे में बताने की। ठीक है ना? Okay. स्लोप Mm-hmm. जो भी आपने मुझे रीजन दिया था, जैसे आप सिलेंडर जैकेट का जो एग्जांपल लेके थे इंसुलेटेड Yes, वाले, sir. उसको मत मेंशन करो। Uh-huh. वैसे क्लोज Okay. क्वेश्चन बनेंगे जैसे मैंने वो कर दिया, कोई फायदा है, कोई आपको कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, Okay. Okay. स्लो प्रोसेस फास्ट प्रोसेस वो मेंशन कर सकते हो, इरिवर्सिबिलिटीज मेंशन करोगे तो Oh, ज्यादा बेटर रहेगा आपके पास यहाँ पे। okay. ठीक है, Mm-hmm. और इसके अलावा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग दी टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में, आप Okay. डिप्लोमा के लिए जा रहे हो तो आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए कौन सा थर्मोमीटर किस टेम्परेचर रेंज के लिए यूज होता है। थर्मोकपल की अगर हम Definitely. बात करें तो आपके पास यहाँ पे ट्रिपल Okay. सिक्स से 1063 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच में ये यूज आपके पास यहाँ पे होगा। बाकी के लिए आप कौन सा Okay. रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर आप यूज करते हो। ठीक है, आपने एक मेंशन करा था Mm-hmm. इलेक्ट्रोमोटिव, नहीं Okay. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थर्मोमीटर, ऐसा कोई थर्मोमीटर होता Okay. नहीं है। ठीक है, Okay. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके कोई थर्मोमीटर आपके पास यहाँ पे नहीं है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू आपके पास यहाँ पे काम करता है, वोल्टेज डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। Yes. ठीक है, जिसको हम एमएफ वोल्टेज Okay. हम नाम देते हैं, उसको थ्रू जनरेट करता है वो। No. स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पूछा क्लासिकल है स्टैटिस्टिकल, नाम से देखा Yes. करो। टेस्ट जो Okay. स्टैटिस्ट वर्ड है, जो स्टैटिस्टिक वर्ड हमारे पास है वो किससे डील करता है? इंडिविजुअल डाटा से डील करता है। एक टेबुलर फॉर्म में अगर Okay. आपके पास डाटा है तो उससे डील कर रहा है, स्टैटिस्टिकल आपका डाटा जिसको हम बोलते हैं।
सेम वे में अगर हम्म। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है तो ये आपका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करता है, इंडिविजुअल ओके। बिहेवियर्स की बात करता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, हम्म। लेकिन क्लासिकल ऐसा नहीं, वो आपका मैक्रोस्कोपिक की बात करता है। ठीक है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आओ मुझे। डन ओके। डन। बाकी सर 1 मिनट, तो आपको ऐसा अगर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सर, दिख रहा है सर थोड़ा कि? कंसेप्ट आपके पास क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा मिक्सअप कर जा रहे हो कि आप अपने आंसर्स में, ओके ओके। है ना, आप कंफ्यूज कर दे रहे हो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्लोसेस एंड इक्वालिटी, उसमें आप क्लैरिटी से मुझे बोला सर क्लोसेस एंड इक्वालिटी इज गिवन बाय द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी, इट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। इट इज बेसिकली ओके टेलिंग यू दैट द वेदर द प्रोसेस इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल और इरिवर्सिबल। इतना से यहाँ पे ओके। मेंशन करो। आपको डन आपने डन क्या करा, डन। आपने पूरा का पूरा ये बताया सर इट इज रिवर्सिबल के लिए अलग से डिफाइन होगा, इम्पॉसिबल के लिए अलग से डिफाइन होगा, उसके ये एक्सप्लेन करने के बाद आप मुझे कंडीशंस बता रहे हो, तो थोड़ा आपका आंसर ना बहुत ओके। ज्यादा लेंथी चला गया, इतना नहीं लेके डन जाना, डन डन। सिंपल टू द पॉइंट टू द बात पॉइंट, कीजिए, टू द पॉइंट। टू द ओके पॉइंट ओके बात सर, ओके कीजिए। ठीक है ना, ओके। ये भी नहीं हो कि थैंक बिल्कुल ही यू। शॉर्ट आंसर हो जाए। अब आपसे कोई यस पूछना यस। है तो ये ना बोलो डेल क्यू बाई टी लेस देन जीरो का काम हाँ करता है, हाँ। ऐसा नहीं। पहले मेन डन डन। एक्सप्रेशन, मेन डेफिनेशन, उसके यस बाद सर। जो भी आपको पता है उसके बारे में आप वो बता सकते हो, दैट्स इट। ठीक है। ओके।